हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। आप देख रहे हैं इंडियन बेसिक लॉ और मैं हूं मिष्टी आपके साथ। हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आज फ्राइडे 5 जून 2020 है और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इसलिए आज मैंने एनवायरनमेंट डे के ऊपर जो वीडियो बनाई है और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एनवायरनमेंट के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इवन अगर कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है तो भी हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सुरक्षित रहे। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 48A इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये किस चीज़ के लिए है? ये है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये सेफ गार्डिंग के लिए यूज़ होता है। आर्टिकल 48A, द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री. For environmentalists, it stands out for making environment part of the constitution. It is very important part of the constitution कि environment को protect करना है। 1976 introduced environment to the Indian constitution, set stage for protection policies. कब ये इंट्रोड्यूस हुआ था? द 42nd अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल 48A, पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट विच रीड द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। ये किस चीज़ के लिए है? ये 42nd अमेंडमेंट है और किस चीज़ के लिए? सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। आर्टिकल 51AG भी उसी के साथ था, पार्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज. We can read about it. It shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment. तीन जो डिफरेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो साथ में मिलकर एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, राइट के लिए खड़े हुए। एनवायरनमेंट लॉयर शिवानी घोष, a fellow with the Center for Policy Research, explained it is interpretation of this duty that has allowed any citizen, whether they are personally affected or not, to approach the National Green Tribunal when they perceive a threat to the environment. अगर ऐसा कोई environment को threat मिला है, ऐसी कोई चीज़ मिली है, तो वो personally approach कर सकते हैं National Green Tribunal को, जिससे कि environment को बचाया जा सके. In one of the NGT's first cases, recounted Ghosh, a group of citizens approached the court against a hydropower project. However, they were not project affected people as they did not live in the area that would be submerged. The question rose of which could be aggrieved party. The NGT decided it could be anyone as it was anyone's duty. कोई भी हो सकता है जो बचा सकता है, क्योंकि ये हर किसी की ड्यूटी है. When the constitution was drafted, the concept of the environment as right, as something citizens must take care of, was hardly present. The only laws in existence were British era ones which sought to manage forest and wildlife. A paper by scholar Shekhar Singh that tracks the evolution of environmental laws in post-independence India, which is through the 5-year plan, notes that the British replaced the traditional system of managing nature and natural resources. जब ब्रिटिश के टाइम पर ये चेंज हुआ था सिस्टम, for pre-colonial India had a strong environment consciousness with the centralized management system and scientific management and classification. These laws got a new avatar in 1980s Forest Right Act, when the Congress government took note of the widespread deforestation in the country and made the center the authority that decides on environment clearances to use forest land for non-forest purposes. Means बहुत सारा टाइम ऐसा था कि इंडस्ट्रीज आ गई थी और फैक्ट्रीज आना शुरू हो गई थी, तो वो डिपेंड करता है कि वो जो लैंड है वो किस चीज़ पर्पज से यूज़ किया जाता था. Much before that, however, independent India got its first environmental law in 1972, the Wildlife Protection Act, born from India's international obligations, having signed the international agreement, the Convention on International Trade in Endangered species of wild fauna and flora, which is for animals and plants. In 1984, the Union Carbridge India plant in Bhopal have leaked methyl isocyanate gas, killing 3,500 people. The gas disaster was followed by another industrial accident in Delhi, 1985, where oleum gas leaked from a Shriram Food and Fertilizer Limited complex, killing one. None of the previous laws of water and air were of use here. पहले ऐसा law नहीं था. The 1986 Act then came about an umbrella legislation deliberately
The 1986 Act then came about an umbrella legislation deliberately thin, said Ghosh, to give the government broadly defined omnibus powers to respond to disaster and accidents of varying nature. Before this act in 1972 came the Water Act, setting up the precursors of the pollution boards as we know them. Even then, said Ghosh, parliamentary debates mentioned the need to regulate air pollution. This law fruition in 1981 in the Air Prevention and Control of Pollution Act that revamped the pollution control boards and expanded their jurisdiction. The most talked about, said Ghosh, is the 1996 judgment of the Vellore Tanneries case, where citizen approached the court over the severe water pollution caused by the tanneries in the Vellore, Tamil Nadu. The Supreme Court borrowed from the international precedents from the Rio Declaration on Environment and Development 1992 to introduce to Indian law the concept of sustainable development of polluter pay, the precautionary principle. It also set up a loss of ecology authority which existed till 2017 to attend to the day matters of compensation in the case. It claimed it is fundamental human right to live in an unpolluted environment. So, ये हमारा fundamental right है. It is fundamental duty of every individual to maintain purity of the environment. ये जो अब तक मैंने बताया वो basically history है, तो मैंने उसको read कर दिया. But अगर इसका कंक्लूजन की बात करें तो हमारा राइट है कि हम पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में लिव करें, मतलब जिएं, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है कि हम हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखें, साफ सुथरा रखें. The main attention in the education on environment is as below: overpopulation and the ways to check its rapid growth, afforestation as a preventive to soil erosion and water pollution, methods to prevent air pollution, insisting on smokeless cooking, discipline in playing radio and television, set a ban on use of loudspeaker, elementary knowledge of the scientific and philosophical basis of man and the environment, rules regarding disposal of household waste, general principles of sanitization. So we will talk about environment and citizens. Then Constitution of India has made a double provision, a directive to the state for protection and improvement of environment, imposing on every citizen in the form of fundamental duty to help in the preservation of natural environment. This is the testimony of government's awareness of a problem of worldwide concern, since protection of environment is now a fundamental duty of every citizen. क्योंकि बार बार यही कहा गया है कि जो प्रोटेक्शन है environment का वो हमारी fundamental duty है. It is natural that every individual should do it as personal obligation. मतलब हमें वैसा ही करना चाहिए जैसे हम अपना घर साफ रखते हैं. Merely by regulating the mode of his natural life, the citizen has simply to develop a habitual love for pollution. Let's talk about case. Protecting the environment oleum gas leak case 1986. MC Mehta, who was single-handedly responsible for making environment degradation a part of public discourse, says it is vital that PILs have no ulterior motive. Judgment क्या था इस केस का? The court held that any enterprise that is engaged in inherently dangerous activity is absolutely liable to compensate all those affected by an accident. The key feature of the judgment was the principle of absolute liability, in which no exceptions such as an act of God are brooked. Let's talk about Article 51A, Fundamental Duty. It shall be the duty of every citizen of India to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem, to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. ये भी मैंने last video में आपको बताया था. You can see link in the description. To defend the country and render national service then called upon to do so, to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practice derogatory to the dignity of women, to value and preserve the rich heritage of our composite culture, to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures, to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform, to safeguard public property and to abjure violence.
एब्जर्व का मतलब होता है कि प्रॉमिस कर लेना कि हमें ये गलत नहीं करना, और इन मीनिंग वी कैन से एब्जर्व मीन्स टू स्वेयर ऑफ एंड इट अप्लाइज टू समथिंग यू वंस बिलीव्ड. To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement. Part 5th of the Union Chapter 1, Executive, the President and the Vice President. इन सब का कंक्लूजन यही है कि आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है. कनेक्टिंग ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरनमेंट इज़ अ वैल्यूएबल सोर्स बुक दैट एक्सप्लोर्स द अनचार्टेड टेरिटरी. और द नीड फॉर द सोशल पार्टिसिपेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स. और इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत यही है कि पूरे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और ऐसे सारे ग्रुप्स जो पेड़ों को कट करते हैं या एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, उनको यूजली आप कंप्लेन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में पता लगे. और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा.